Okay, in the previous lectures we studied about the chemical bonding which exists between different atoms to form molecules. What are the forces behind the formation of these bonds? We are going to discuss in this lectures, that is interatomic or intermolecular forces. So, first of all we are going to come to ionic bonds. In ionic bond, the positive ions and the negative ions are tightly held together by Coulomb's attractive force or electrostatic attractive force. For example, sodium ion bonded to chlorine ion form a table salt which we call sodium chloride. आयनिक बॉन्ड जो होते हैं उसमें आपने देखा था कि एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे की निस्बत कम होती है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जिसकी तरफ ट्रांसफ़र हो गया वो नेगेटिव आयन बन जाता है और जिससे ट्रांसफ़र हो गया वो पॉजिटिव बन जाता है। जिस तरह सोडियम के आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के आउटर शेल में जो है आपके पास क्या है 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दोनों को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सोडियम क्या कर लेता है, डोनेट कर लेता है, क्लोरीन को दे देता है ताकि ऑक्टेट उसका कंप्लीट हो जाए। एंड व्हाट इज़ द फोर्स बिहाइंड देम? सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव ions are being created which never let them to go away from each other, so they are linked together, they are bonded together by this attractive force which we call Coulomb electrostatic force, जिसको हम क्या कहते हैं, Coulomb electrostatic force कहते हैं। Second is the force between ionic and dipole bonding, meaning that ionic material when bonded to a dipole, ionic material like sodium chloride and dipolar like water, when they are bonded together, they are bonded because of the forces of attraction between the cation or anion of ionic material to the solvent molecules like H2O when dissolved in water. Ionic और डायपोल बॉन्डिंग जो होती है, जो आयंस में दो चीज़ें, आयनिक बॉन्ड में दो होते हैं, एक होता है कैटाइन, एक होता है एनायन। ये कैटाइन एनायन डायपोलर सब्सटेंस जिस तरह वाटर हैं उसमें जब आप डिज़ॉल्व करते हैं तो कैटाइन और एनायन क्या हो जाते हैं, उसमें डिज़ॉल्व हो जाते हैं। सोडियम और क्लोरीन जो है वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। तो इसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इसको आयनिक एंड डायपोल बॉन्डिंग का रिस्पॉन्सिबल कहा जाता है। सो इंटर आयनिक एंड डायपोल बॉन्ड इज़ द रिजल्ट ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटाइन और एनाइन एंड द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन द वाटर और अदर पोलर मॉलिक्यूल, वाटर हो या अदर पोलर मॉलिक्यूल में हो जो उसमें आपने क्या करता हो, डिसॉल्व हो। फॉर एग्जांपल sodium chloride dissolved in dipolar H2O molecule to form sodium ion and chlorine ion surrounded by water molecules. Water is a dipolar OHH and sodium chloride is ionic. Sodium is plus ion which will be pulled by oxygen of water. Chlorine is negative which will be pulled by the hydrogen of water molecule. As a result they will dissociate and will be dissolved. So the ionic and dipolar bond are because of the attractive force between cation anion and the solvent molecules. तीसरी जो है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं, द बॉन्ड इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ डायपोल ओरिएंटेशन है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो डायपोल ओरिएंटेशन से इंटरेक्शन बिटवीन डायपोल इंटरेक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम इन अ पोलर लाइक
molecules OH, NH and the electronegative atoms nitrogen, oxygen, fluorine. So these are much stronger forces. यानी ये डायपोल्स में हम कह रहे हैं, हम कोवेलेंट और आयनिक के साथ नहीं, बिकॉज हमने कहा आयनिक बॉन्ड जो है वो मच स्ट्रांगेस्ट है, उसके दरमियान जो इंटरेक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। दूसरे नंबर पे कोवेलेंट बॉन्ड्स है। फिर इसके बाद आते हैं हाइड्रोजन जो है वो डायपोल। तो डायपोल जो फोर्सेस हैं उसमें ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो क्या होती है, स्ट्रांगर होती हैं। क्या होती हैं, स्ट्रांगर। सो दीज आर मच स्ट्रांगर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन देन अदर डायपोल फोर्सेज। यानी डायपोल फोर्सेस के दरमियान जो और होती हैं तो उसकी निस्बत उसकी ये अट्रैक्शन क्या होती है, ज़्यादा होती है। देखो, व्हेन अ हाइड्रोजन a very small atom is bonded to other very small atom of high electronegativity, हाइड्रोजन स्मॉल है और अगर ये दूसरे स्मॉल एटम के साथ जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती हैं मिल, तो वो क्या करते हैं, दे फॉर्म अ स्ट्रांग अट्रैक्शन टू सिमिलर एटम्स, अपने जैसे और एटम के साथ स्ट्रांग अट्रैक्शन क्या कर ले, अट्रैक्शन जो है वो डेवलप कर लेती हैं। ओनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल भी क्या बनता है, वाटर मॉलिक्यूल्स आल्सो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद अदर वाटर मॉलिक्यूल, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ बनाता है। अब हम आते हैं डायपोल जानते हो, टू opposite charges separated by small distances forms a dipole। ये परमानेंट डायपोल भी हो सकता है पोलर्स में, और ये इंड्यूस भी हो सकता है नॉन पोलर मटेरियल और उसमें। तो ये देखो, द डायपोल बॉन्डिंग रिजल्ट फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, द डायपोल बॉन्डिंग रिजल्ट फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये पोलर और पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान होती हैं, दूसरा पोलर ले लो उसके दरमियान होती हैं। तो इसको फॉर एग्ज़ाम्पल वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O इज़ अट्रैक्टेड टू अनदर मॉलिक्यूल ऑफ H2O मॉलिक्यूल बिकॉज H2O इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि H2O जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है। तो ये बेसिकली ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पोलर एंड पोलर होती हैं, डायपोल बॉन्डिंग में किरदार अदा करने वाली फोर्स। सो वाटर इज़ द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जिसमें अक्सर आयनिक कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो उसमें क्या होते हैं, डिज़ॉल्व होते हैं। जब उसमें डाले जाते हैं तो वो उसमें डिज़ॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है ये आता है डिस्पर्शन, जिसको आप लंदन फोर्सेस भी कहते हो। डिस्पर्शन फोर्सेस आर लंदन फोर्सेस। दीज आर attractive forces that arises between temporary dipoles and induced dipole and atoms or molecules। टेम्परेरी डायपोल्स का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी चार्ज बॉडी को दूसरे के नज़दीक ले आ जाए, न्यूट्रल बॉडी के नज़दीक ले जाया जाए तो उसके अंदर क्या होती है, चार्जेस की रीशफलिंग हो जाती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है और उसमें क्या हो जाता है, डायपोल्स बन जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड डायपोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड। यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसमें चार्जेस की क्या होती हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, स्लाइड क्या हो जाती हैं, अपनी जगह से हिल जाते हैं और पार्शली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड डायपोल्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल iodide bonded to another iodide to form liquid or solid iodine, to form I2 और I2 आपस में बॉन्ड होकर क्या बना लेता है, सॉलिड आयोडीन बना लेता है। द लार्जर द मालिक्यूल द स्ट्रांगर द डिस्पर्शन फोर्सेस। जितना मालिक्यूल लार्ज होगा उतना डिस्पर्शन फोर्सेस क्या होगा, स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, और जितना छोटा होगा तो डिस्पर्शन फोर्सेस भी क्या होगी, उतनी ही कम होंगे। सो 5 टाइप ऑफ थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड एंड ऑल वी डिस्कस्ड व्हाट आर द फोर्स। ये देखो बॉन्ड्स में एक पर्टिकुलर छोटी डिस्टेंस तक ये रिपल्शन होती है, फिर उसके बाद क्या होती हैं, सारे अट्रैक्टिव फोर्सेस शुरू हो जाती हैं। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द एनर्जी, व्हेन द एनर्जी रीचेस टू इट्स मिनिमम लेवल देन स्टेबिलिटी कम्स and the bonds is established between atoms and forms molecules। इसी तरीके से यानी इब्तिदा में जब डिस्टेंस बहुत क्लोज आप ले आते हो एटमों को तो ये रिपल्शन करती है, जब आप थोड़ा तो फिर अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। अ शॉर्ट वीडियो क्लिप ऑन
what we have discussed. First, we have ion-ion interactions. Large ionic solids are held together by these networks of ionic bonds, which are the strongest intermolecular force because they involve formal charges. After that, we have ion-dipole interactions. So first, we must understand what a dipole is. The covalent bonds in a water molecule are polar because oxygen is more electronegative than hydrogen and will pull the electrons in the bond towards itself. Because of the bent shape of the molecule, when we combine these vectors, we see water has an overall dipole, or a side of the molecule with some electron excess and a side with electron deficiency. Dipoles can make electrostatic interactions because the partially negative side is attracted to positive charges and the partially positive side is attracted to negative charges. So when sodium chloride dissolves in water, the sodium ions make ion-dipole interactions with the negative side of water's dipole. And the chloride ions make ion-dipole interactions with the positive side of water's dipole. Each ion can make several of these interactions, which store a lot of energy, which is why sodium chloride will dissociate in water in the first place. Next, we have dipole-dipole interactions. As you can guess, this is when dipoles interact with each other, as with pure water. When in liquid form, water molecules will move in such a way so as to always be making electrostatic interactions between the negative end of one dipole and the positive end of another dipole. In this case, these dipole-dipole interactions qualify for a special title, hydrogen bonds. This is when dipoles generated by NH, OH, or FH bonds interact with each other. These are just especially strong dipole-dipole interactions. They are especially strong because these are the most electronegative elements, so they will create the most strongly polarized bonds, resulting in a very strong dipole and therefore very strong dipole-dipole interactions. We can almost think of partial charges as some fraction of a formal charge. So the greater the partial charge, the stronger the interaction, though never quite as strong as interactions between formally charged particles. Lastly, we have the van der Waals, or the London dispersion force. These names refer to the same force and are completely interchangeable, so I will arbitrarily refer to them as van der Waals forces. This is the consolation prize of the intermolecular forces because any substance can do it. Only ions make ion-ion interactions, and only covalent molecules with a dipole can make dipole-dipole interactions, but absolutely anything can do van der Waals. For example, take a look at helium. Helium is a noble gas, and due to a full valence shell, it does not make bonds with other atoms. So a sample of helium is just a bunch of helium atoms. Well, the electron cloud around a helium atom will at any time be slightly lopsided or skewed towards one direction. This will result in something called a momentary dipole. This means one side of the atom is ever so slightly partially negative, and the other side is slightly partially positive. This is much weaker than a formal dipole, but it still exists and can be measured. If a momentary dipole approaches another atom, it can generate an induced dipole, meaning the slight partial negativity repels this electron density over to the other side of the atom, so it will also have a slight dipole. And then there can be a momentary dipole-induced dipole interaction, that is the van der Waals force. This is a weak and fleeting attraction, but this is all that monoatomic species and non-polar covalent compounds can do. And for very large molecules like some hydrocarbons, the force can become significant. So the ion-ion force is strongest because it involves interactions between formally charged particles. Ion-dipole is next because it involves a formal charge and a partial charge. Then dipole-dipole, which is between partial charges, and van der Waals, which is between tiny induced dipoles. To see how intermolecular forces dictate phase change, let's do a thought experiment. First, recall that a solid's particles are rigidly packed and not moving.
A liquid's particles are moving, but they are still close together and interacting. Gaseous particles are moving and they are far away from each other, so compared to liquids, they basically don't interact. So let's pretend we have three substances: helium, water, and sodium chloride. We will place them at 0 Kelvin, or absolute zero, which is the lowest temperature possible, a complete absence of heat energy, where there is no energy available for motion. Here, everything, even helium, is a solid. In order to go from the solid to the liquid to the gas phase, heat energy has to go into the sample and overwhelm the intermolecular forces that are occurring. In a liquid, there is some energy stored in electrostatic interactions, and whatever amount that is precisely the amount of heat energy that has to be provided to liberate the molecules into the gas phase where they are not interacting and not storing energy, because nature will not tend to go to a higher energy spontaneously. So the energy stored in these interactions has to be provided in some other way. This means that the stronger the forces between the molecules, the more heat energy we will have to provide to melt and boil the sample. So let's take our three substances, slowly raise the temperature, and see what happens. Helium, as it is only participating in incredibly weak van der Waals forces, needs only a minuscule amount of heat energy to disrupt these weak interactions. That's why helium will melt and boil at barely 1 degree above absolute zero. Water, on the other hand, is participating in strong dipole-dipole interactions called hydrogen bonds. There is a significant amount of energy stored in these interactions, so we will need considerable heat energy to overcome them. Water melts and boils at 273 and 373 Kelvin respectively. Lastly, sodium chloride is making extremely strong ion-ion interactions, so it will take a huge amount of energy to melt and boil this solid. It melts at 1074 Kelvin, which means there's a lot of energy stored in the ion-ion forces. We can use this information to decide which of a given set of compounds might have the highest boiling point. When we ask this question, we are really asking which compound is generating the strongest intermolecular forces. The stronger they are, the more heat energy we will need to pull the molecules apart and put them in the gas phase, so they will boil at higher temperatures. We need to be able to look at a molecule and decide what kind of interactions it will make. If it is a covalent compound with non-polar bonds, it can only do van der Waals. If it is a covalent compound with polar bonds, then we must look at the geometry to see if there is an overall dipole. For example, water has a dipole, but carbon dioxide does not, because even though carbon-oxygen bonds are polar, the direction of these polar bonds causes them to cancel each other out, and the molecule is non-polar overall. Similarly, compare BF3 with NH3. Again, the molecular geometry determines that this is non-polar, because the vectors precisely cancel each other out. But with ammonia, all the bonds point somewhat towards one direction. So ammonia has a dipole. CF4 is nonpolar, again because of geometry. But CH3F has just one polar bond, so that has a dipole. If a molecule has a dipole, it can do dipole-dipole interactions. And lastly, formally charged ions participate in ion-ion interactions. See which compounds can do what, and you will be in business. Okay, now come to bond energy. What a bond energy is. Bond energy is the energy required or needed to break 1 mole of particular molecules or atom is called bond energy. ये वो एनर्जी हैं जो 1 मोल
ऑफ पर्टिकुलर मालिक्यूल्स को तोड़ने के लिए, यानी उसके दरमियान जो बॉन्ड्स है उसको तोड़ने के लिए ज़रूरी होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। दैट इज़ व्हाट वी कॉल बॉन्ड एनर्जी। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है, फॉर इंस्टेंस द एंथैल्पी चेंज ऑफ ब्रेकिंग ऑफ मीथेन into carbon atom and 4 hydrogen ion divided by 4 bonds yield the bond energy, yields the bond energy। क्या करते हैं, बॉन्ड एनर्जी क्या है, द एंथैल्पी चेंज। यानी एंथैल्पी चेंज क्या आता है, हीट आप दे दे किसी चीज़ को और बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी आती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी चेंज कहते हैं, एंथैल्पी कहते हैं। So for instance, the enthalpy change of breaking methane into carbon atom and 4 hydrogen atom, methane क्या है, कार्बन एटम, और जो 4 हाइड्रोजन एटम है उसको तोड़ने के लिए, और उसको अगर हम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पे डिवाइड कर ले, क्योंकि CH के साथ 4 बॉन्ड्स होती हैं, yields the bond energy, वो क्या देती हैं, आपको बॉन्ड एनर्जी देती हैं। बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज़ क्या होती हैं, बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज़ आर एन एवरेज ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी विद इन मालिक्यूल। ये एवरेज वैल्यूज़ ऑफ एनर्जी हैं जो बॉन्ड को क्या करते हैं, डिसोसिएट करते हैं। डिसोसिएशन का मतलब है बॉन्ड को तोड़ते हैं, वो एनर्जी होती है। सो बॉन्ड एनर्जी इज़ द सेम थिंग एज बॉन्ड डिसोसिएशन। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज़ समथिंग एल्स, एंड बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो तो एक मोल के लिए होती है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसी भी एक बॉन्ड को या उसको तोड़ने के लिए भी हो सकती है। दैट इज़ व्हाट वी कॉल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सो बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज़ आर इन एवरेज वैल्यूज़ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी विद इन, यानी बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज़ आर इन एवरेज वैल्यूज़ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी विद इन अ मालिक्यूल। मालिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, इसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। ब्रेकिंग subsequent bonds requires a different amount of energy, यानी डिफरेंट मालिक्यूल्स के दरमियान बॉन्डिंग की नेचर क्या होती है, वो डिफरेंट होती है, तो उसको डिसोसिएट करने के लिए, इसको स्प्लिट करने के लिए, बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए एनर्जी की मकदार भी क्या होती हैं, डिफरेंट रिक्वायर्ड होती हैं। और वो बॉन्ड जो सेटल होते हैं, जब एनर्जी बॉन्ड कब स्टेबल हो जाते हैं, जब एनर्जी सबसे मिनिमम वैल्यू पे होती हैं। When energy reaches to its minimum value, then the bonds become stable. इसकी कैलकुलेशन क्या है, the difference between sum of bonds broken, जो जितनी भी bonds टूटते हैं उसका सम, और जितने बॉन्ड फॉर्म होते हैं, इन दोनों के बॉन्ड एनर्जी में जो डिफरेंस है, इसको हम क्या कहते हैं, चेंज इन बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, या बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं, आर बॉन्ड। सो द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन, सम ऑफ बॉन्ड ब्रोकन, ये देखो, ये सिग्मा सम के लिए सम ऑफ बॉन्ड ब्रोकन माइनस सम ऑफ बॉन्ड फॉर्म, इसको हम क्या कहते हैं, चेंज इन बॉन्ड एनर्जी, डेल्टा एच कहते हैं, या दूसरे अल्फाज में एंथैल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथैल्पी कहते हैं। The bond energy can either be positive or negative, is by definition of enthalpy. Bond enthalpy is the energy, is by definition, bond enthalpy is the energy required to break a bond. ये वो एनर्जी है जो क्या करता है, बॉन्ड को तोड़ता है। Thus the reaction enthalpy can be negative for exothermic, जिसमें हीट बाहर निकलती है, and positive for endothermic, because bonds are broken in reactants and formed in products। क्योंकि बॉन्ड जो है रिएक्टेंट्स एक तरफ वाला होता है, जो कंपाउंड बना लेता है वो दूसरा प्रोडक्ट कहलाता है। तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी और जो प्रोडक्ट की एनर्जी है, उनमें जो दोनों में डिफरेंस होता है, दैट एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड। इसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं, या चेंज इन बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। अब आते हैं बॉन्ड लेंथ्स एंड बॉन्ड एनर्जी का आपस में ताल्लुक भी कहेंगे। बॉन्ड लेंथ्स क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ बॉन्डेड एटम
are called bond lengths or bond distances. The distance between centers of bonded atoms, जो atoms bonded हैं उनके centers के दरमियान जो फासला है उसको bond lengths या bond distance कहते हैं. Bond lengths in general varies consistently with different factors. ये different factor के साथ consistently vary करती है. For instance, nature of bonds. Nature of bond क्या है? कोवेलेंट है, आयनिक है, विंडरवाल है, क्या है उसके साथ ये क्या करती हैं, वेरी करती हैं. सो द बॉन्ड ऑर्डर्स यानी डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉन्ड्स एंड एंटी बॉन्ड्स. फॉर एग्जांपल इन डायटोमिक सोडियम ट्राइबॉन्ड्स द बॉन्ड नंबर इज़ 3. इन एसीटोन द बॉन्ड नंबर बिटवीन द 2 कार्बन एटम इज़ 3. देखो ना, 2 कार्बन एटम के दरमियान जो बॉन्ड है वो भी 3 हैं. एंड CH बॉन्ड ऑर्डर, जो CH बॉन्ड ऑर्डर है इज़ 1 और CH के दरमियान जो है वो 1 है क्योंकि एक लाइन है. जब एक लाइन हो तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, जब 3 लाइन हो तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होती है, 3 होती है. और इसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं. क्या कहते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं. तो जनाब आपने देखा कि ये है बॉन्ड ऑर्डर जो है वो भी क्या करते हैं, आल्सो अफेक्ट बॉन्ड लेंथ्स. बट बॉन्ड लेंथ्स of the same order for same pair of atom in various molecule are very consistent. Similar atoms या molecules के एटमों के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ्स है दे आर कंसिस्टेंट. नीचे जो है हमने टेबल शो कर दिए हैं और उस टेबल में आप देखेंगे द टेबल शोज़ द इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेज आर बॉन्ड लेंथ्स जो मुख्तलिफ उसके दरमियान होती है. सो बॉन्ड लेंथ्स आर डिटरमिन्ड. बॉन्ड लेंथ्स को आप डिटरमाइन किस तरह करते हैं, या तो एक सिरे से डायफ्रैक्शन मेथड से करते हैं, टेक्निक से करते हैं, या आप क्या करते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से. आज के लेटेस्ट जो टेक्निक है न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से भी. स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड का मतलब स्पेक्ट्रा जो होता है उसका आ जाता है लाइट ऑब्जॉर्ब्ड और लाइट एमिटेड बाय मॉलिक्यूल्स से भी स्टडी कर लेते हैं. सो द बॉन्ड लेंथ ये होता है, तो ये देखो द बॉन्ड लेंथ रेंजेस फ्राम 74 पिकोमीटर फॉर HHH एंड H टू सम 200 पिकोमीटर फॉर लार्ज एटम. यानी हाइड्रोजन के लिए बॉन्ड लेंथ जो है जो कि सबसे मिनिमम है 74 पिकोमीटर है, जबकि बाकी जो लार्जर एटम है अप टू 200 पिकोमीटर है बॉन्ड लेंथ. तो ये देखो ये आपके पास मुख्तलिफ बॉन्ड लेंथ दिखा दिए गए हैं हाइड्रोजन के लिए. और उसको देखो ये जो है बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, ये बॉन्ड है और लेंथ क्या है, ये देखो 109 है, ये मुख्तलिफ उसका है. इसका ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड लेंथ है. ये देखो कार्बन वाले देख लो, ये 154 है या 145 है, ये 154 हैं. और एनर्जी उसके लिए क्या हो चाहे कितनी है, बॉन्ड एनर्जी 348 है और ये किलो जूल पर मोल में है. किस चीज़ में, किलो जूल. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर बीइंग शोन in this table which are showing the bond lengths between different bonded atoms and the bond energy in kilojoule per mole. So this is about the different type of bonding between molecules and atoms. So this table show you everything. Now द बॉन्ड एनर्जीज डिपेंड अपॉन. बॉन्ड एनर्जी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, बॉन्ड आर्डर पे डिपेंड करती है जो कि अभी हमने डिस्कस किया, एंड लेंस. बॉन्ड आर्डर और बॉन्ड लेंस पे भी डिपेंड करती हैं. हाफ द बॉन्ड लेंथ ऑफ अ सिंगल बॉन्ड, हाफ द बॉन्ड लेंथ यानी सिंगल बॉन्ड का हाफ जो होता है, अगर 10 है 10 का हाफ क्या है 5 है. हाफ द बॉन्ड लेंथ ऑफ अ सिंगल बॉन्ड ऑफ टू सिमिलर एटम इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस. कोवेलेंट रेडियस किसको कहते हैं, हाफ द बॉन्ड लेंथ ऑफ अ सिंगल बॉन्ड, इसको हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट रेडियस कहते हैं. सो द सम ऑफ टू कोवेलेंट, अगर इसको दो कोवेलेंट रेडियाई का सम कर लें इज़ यूजुअली द सिंगल बॉन्ड लेंथ. दो कोवेलेंट रेडियाई का जो सम है वो क्या होता है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल सिंगल बॉन्ड लेंथ, उसको कहते हैं. क्या फॉर एग्जांपल अगर आप देख लें the covalent radii of hydrogen and carbon are 37 picometer and 77 picometer in respective order. अब देखो the CH यानी डबल जो है बॉन्ड है, CH बॉन्ड is thus 37 plus 77, 37 plus 77
दैट इज़ इक्वल टू 114 पिकोमीटर है। क्या है? 114 पिकोमीटर। बॉन्ड ऑर्डर को अभी हमने ऊपर डिस्कस भी किया। तो द बॉन्ड ऑर्डर इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर बिटवीन टू एटम्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? द बॉन्ड ऑर्डर इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, यानी फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स है, तो उसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। सो बॉन्ड ऑर्डर फॉर कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन डबल एंड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्डिंग इज़ 2, दैट इज़ 2। ये आप देख रहे हैं 2 लाइन्स है, तो बॉन्ड ऑर्डर उसका क्या है? 2 है। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये भी हम ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, is called bond dissociation energy or simply bond energy. Since bond lengths are consistent, bond energy of similar bonds are also consistent. चूँकि आपको पता है कि बॉन्ड लेंथ जो है वो कंसिस्टेंट है, वेरी करती है कंसिस्टेंटली, तो बॉन्ड एनर्जी भी वेरी करती है कंसिस्टेंटली। सो बॉन्ड लेंथ्स आर यूजुअली स्मॉल इनफ so that they are expressed in a smaller unit, that is picometer, which is equal to 10 to the power minus 2 meter, and bond energy in kilojoule per mole. So the bond energy is essentially the average enthalpy change for a gas reaction to break all the similar bonds. तो हम ये देखो वो एनर्जी है बॉन्ड एनर्जी, जो कि किसी चीज़ को क्या करते हैं? तोड़ देते हैं और उसको गैसियस स्टेट में क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं मीथेन, और मीथेन के लिए CH4 के लिए जो है 435 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है ताकि उसको तोड़ा जा सके, और इसी तरह और भी आपको एग्जांपल दे दिए गए हैं, ये है। और 10 द एवरेज बॉन्ड एनर्जी फॉर मीथेन टू ब्रेक इज़ अबाउट 416, ये देखो इज़ इक्वल टू कितना है? 416 किलो जूल, या 4, बट ये एक्चुअली जो आपने पहले पढ़ा है 436 नहीं है, 416 क्या है? किलो जूल पर मोल है। सो बॉन्ड एनर्जी इज़ द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल बॉन्ड। बॉन्ड एनर्जी स्ट्रेंथ ऑफ द केमिकल बॉन्ड फॉर कोवेलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड एनर्जी एंड द बॉन्ड लेंथ डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ पे डिपेंड करता है। कोवेलेंट बॉन्ड्स के लिए साइज़ ऑफ द एटम्स पे डिपेंड करता है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है, एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है। सो दीज आर जो है ये बॉन्ड एनर्जी के बारे में। जनरली द शॉर्टर इज़ द बॉन्ड लेंथ, द हायर फ्रॉम द टेबल वैल्यूज़ वी कांट ग्रेस्प दी ट्रेंड इजीली। टेबल वैल्यू से नहीं, बल्कि इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप प्लॉट जो है वो बॉन्ड एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उसके दरमियान, और जो बॉन्ड लेंथ है उसके दरमियान आप क्या कर दे? ड्रा कर दे, तो उससे आपके पास क्या हो जाएगा? क्लियर पिक्चर सामने आ जाएगी। हम आपको इसलिए मैंने तेज़ी कर ली कि उसको वीडियो में भी मैं क्लिप में दिखा देता हूँ। ये देखो पहले, अगर ये देखो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0 है। जो आप क्या करते हैं? इसको करीब 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 लाते हैं, तो ये देखो ये आपके पास फिर रिपल्शन फोर्स स्टार्ट हो जाती है, तो ये एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ना शुरू हो जाती है और अनस्टेबिलिटी आना शुरू हो जाती है। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर आपके पास ये देखो बॉन्ड एनर्जी सबसे मिनिमम है, तो ये देखो ये स्टेबल फॉर्म में आ जाते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन फर्स्ट के आगे ये स्टेबल फॉर्म में है। तो जो आप दूर जाते हैं तो ये देखो ये ब्रेकअप आता है, और जब ब्रेकअप आ जाता है तो यहाँ पर आप देखो एनर्जी 0 हो जाती है। जब बॉन्ड क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो इसको हम एक छोटे से एनर्जी वीडियो क्लिप में आपको प्रेजेंट करके दे देते हैं। A covalent bond involves two atoms, typically two non-metals, sharing two electrons, such that each electron is interacting with both of the nuclei. Now it's time to get a bit more quantitative than this with the help of valence bond theory. Let's look at two hydrogen atoms. Given that these have precisely the same ionization energy and electron affinity, electron transfer will not occur, so an ionic bond is not a possibility. Now let's take a look at this diagram, which depicts the potential energy of the two hydrogen atoms as a function of the distance between them. Beginning at the right edge, the atoms are far apart and not interacting, so the potential energy is 0. Let's see what happens as they move closer together. As they approach one another, their 1s orbitals begin to overlap,
allowing each electron to interact with the proton of the other hydrogen atom. As this continues, the potential energy of the system gets lower and lower until an ideal internuclear distance is found, the configuration with the lowest possible energy. This is the ideal distance between the two protons, and therefore the precise bond length for a molecule of hydrogen. This decrease in potential energy occurs because each electron is interacting with both protons, and this is a stabilizing and therefore energetically favorable situation. However, if we continue to push the protons together, things become less favorable due to cumulative proton-proton repulsion and electron-electron repulsion, which will quickly begin to outweigh any proton-electron attraction. This is sort of like if we were to compress a spring beyond its equilibrium position. And this is why we see the curve rise steeply to the left. So as we said, it is this phenomenon that reveals the internuclear distance that offers the lowest potential energy and therefore the ideal covalent bond length for the hydrogen atoms, which for this case will happen to be 74 picometers, where a picometer is a trillionth of a meter. This also shows why covalent bond formation is always an exothermic process, because there will always be a decrease in potential energy as a result of this kind of orbital overlap, and that difference in energy must be released to the environment. This is also the energy that is required to break the bond, and it will be equal to 7.24 times 10 to the negative 19 joules for one hydrogen molecule. That's a very tiny energy, but multiplying by Avogadro's number gives us the energy required to break the covalent bonds in a mole of hydrogen molecules. And that will be 4.36 times 10 to the 5 joules, which becomes quite significant. In this way, we can look at any covalent bond in a slightly more sophisticated way. Sigma bonds involve direct orbital overlap, and this can be between atomic orbitals or between two hybrid orbitals, be they sp, sp2, sp3, sp3d, or sp3d2, the ones we learned about from VSEPR theory. They can even be between an atomic orbital and a hybrid orbital. Pi bonds, on the other hand, involve lateral orbital overlap between unhybridized p orbitals. But no matter what the case, for any covalent bond, there is some kind of orbital overlap, and the pair of electrons will inhabit the overlapping region. It is the mutual attraction between both electrons and both atomic nuclei that facilitates this link. And the more significantly these orbitals overlap, the stronger the covalent bond will be, and the lower the potential energy will be for the system. This is why a shorter bond is a stronger bond, because it signifies greater orbital overlap. The same goes for direct overlap versus angled overlap. Direct overlap is more significant and thus results in a stronger bond. We can assign bond energies to all types of covalent bonds, and they will all be different because they all involve atoms of different elements with different electronegativities. Different orbitals will overlap in different ways, so different amounts of energy will be released upon their formation. Hopefully, we now have a slightly better understanding of covalent bonds.